Welcome back, guys. This is Saurabh Tripathi. Uh, we are here for the UPSC current affairs. This is a YouTube channel dedicated specifically to the current affairs topics for the UPSC Civil Services Examination. And here we dissect, analyze, discuss all the important topics that are there on the newspapers, on important government magazines, which are very relevant from the point of view of this examination. So in that series, I'm starting basically with Indian economy, the prospect of Indian economy in next year. That's this year only, year 2024 years. So a very happy new year to all as well. So share this link with your friends. And basically, as you see, the Gmail is mentioned there, and the Telegram link is also available. Now, ये दोनों language में होगा, Hindi और English both. So I hope all of you will enjoy it. So we are talking about the Indian economic prospect in year 2024. Economy is a very, very important domain, not just from the point of view of the examination. Obviously, that is very important. लेकिन economy का otherwise also, this is the lifeblood of the society in a way. We are talking about the production, the manufacturing, the trade, the consumption of the goods and services in the economy and in the society. And basically, as you are aware of, this is also an election year. The general elections are going to be held in May. So obviously, it will attract a lot of attention, and you can see in many newspapers these days a lot of is written about Indian economic prospect in the year 2024. So I will discuss it in detail. Exactly what are the numbers are saying to us, what the data is speaking to us, what is the general conditions, what are the headwinds and the tailwinds for the Indian economy, internal factors, external factors, the political economy part as well, and what is the future of the Indian economy in the short, medium terms. Now, तो अगर हम ध्यान से देखें for the year 2023, this Indian economy was one of the leading performer at the world stage. Basically, this year has been very volatile since 2019, 2020, 2019 precisely 31st of December, when the news was spreading like a wildfire that a new virus has been detected in Chinese Wuhan province. And 2020, we have seen the lockdowns. Basically, it was very troublesome part in the last 4 years. उसके बाद 2022 में फरवरी there was an invasion of Ukraine by the Russians, and these days you see there is a war ongoing in Gaza, Israel, and obviously uh, turbulences are there around the Red Sea area. Plus, the Chinese belligerence is pretty much high across the region, be it on Indian front, on South China Sea, across the domain. You see that जो multipolarity है, it is coming into the fore. Multipolarity means that the phase in international politics where the American dominance was the de facto variable is simply paving way for multipolarity, which Prime Minister Modi also recently gave an interview to the FT Financial Times. ये ब्रिटिश एक न्यूज़पेपर है जो लंदन पब्लिश होता है, उसमें भी उन्होंने मल्टीपोलैरिटी की बात की है. तो देर आर टर्बुलेंसेस ऑब्वियसली. सो फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें 22-23 में रियल जीडीपी ग्रोथ was 7.2%. This was a very heavy number, very good number. Yes, we can expect more. We should aim high up to 9%. बट इंडियन हिस्ट्री में सन 2003 से 2008 के अलावा 2003-2008 एवरेज ग्रोथ रेट हैव नेवर hovered around 9%. 2008 obviously global financial crisis took place, and then we have seen how it was the last decade almost. So 7% is a very good number. It's a very decent number. It's a record beating number right now. तो डेटा अगर हम देखें, ये तो 7.2% वर्स 2022-2023. अगर लास्ट ईयर की बात है, ये इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, जो कि अप्रैल 1 2023 से शुरू होता है और 31 मार्च 2024 तक जाएगा, इसके दो क्वार्टर्स का डेटा हमारे पास है. क्वार्टर वन दैट इज अप्रैल, मई एंड जून, एंड क्वार्टर टू दैट इज जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. सॉरी. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो डेटा है, that will be released by the authorities on 29th of February 2024. Yes, 29th of February. This is a leap year, 2024.
तो ये जो नंबर है दे आर वेरी गुड, 7.8% इन Q1, 7.6% in Q2. So obviously these are mind-boggling numbers if you see the scope and basically the depth of the growth around this region of South Asia, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, even China. अगर उसको आप देखें and the developed world, be it in Europe, be it in America, the growth is muted. But in India, 7.6% last quarter is very good numbers. These are very good numbers. So that's why an inquiry into the driving forces of growth, inflation, employment, investment, sectoral performance, or whether this growth is sustainable is pretty much required. This is what I will do here with the help of the data which is authentic, which is credible, obviously government data. Now, तो पहला वेरिएबल हमारे लिए ग्रोथ का है. दिस इज ऑल्सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि नॉट ओनली फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. प्रीलिम्स आने वाला है मई में इस साल का जो पेपर है. सो इफ यू रीड दीज concepts carefully, you will have to go in depth simply to understand them so that you are well prepared to answer the prelims questions. तो डिमांड कंपोनेंट की अगर हम बात करें, aggregate demand जो थी, जो हमारा जीडीपी है दैट इज 7.8% इन Q1. आई टॉक अबाउट द Q2 एज वेल. ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है. तो इसमें आप देख सकते हो जो कंपोनेंट हैं इकोनॉमी के. So basically, Indian economy is based on what? Indian economy is based on, if you want to dissect the Indian economy, you can simply say that जो private consumption है, plus government consumption, exports, investment, ये Indian economy को बनाते हैं. तो जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, लाइक दिस इज देयर. प्राइवेट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, आई विल एक्सप्लेन एवरी टर्म, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंपोर्ट, दिस इज द ट्रेड नंबर्स. So these are the basically, if you can divide, simply add export and import, that is trade. So there are four primary vertical for the Indian economy. तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है Q1 में it was in minus 0.7%, private final expenditure 6%, 8% is investment, and exports और imports में आपको numbers जो हैं दिखाई दे रहे हैं, वेरी कर रहे हैं. export has declined 7.7% minus, and imports जो हैं वो बढ़ गए हैं compared to last quarter. ये जो परसेंटेज चेंजेस का मतलब ये हुआ कि हम 2023-24 के जो Q1 है उसको कंपेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के Q1 से. तो उसके बेसिस पे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स. जब इकोनॉमी के बारे में बात होती है तो देयर इज अ ह्यूज जागरण, डेटा जागरण एज ए कॉल इट, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. अब Q1 से कंपेयर हम कर रहे हैं, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर चेंज हम देख रहे हैं. कई जगहों पे आपको प्रीवियस क्वार्टर जो है, जैसे Q1 2023-24 का है, इससे कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-2023. So a lot of confusion obviously will be there. So you have to keep that in mind. And जब भी आप परसेंटेज देखें, always see कि किसके कंपैरिजन में ये बातें की जा रही. Now ये जो ग्रोथ रिवाइवल जिसे हम कहा जा रहा है Q1 का, this is basically led by services. So you can see India, this is a huge debate ongoing in these very moments. As you see, the former RBI Governor Raghuram Rajan is of the opinion that India should not follow the Chinese model of development. India should not follow the East Asian model of development primarily, which has been championed by Japan in 1950s and 60s, which is later copied by South Korea, Taiwan, and then ultimately the Chinese. That is, जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, ये सारी जो एशियन टाइगर्स हैं, जापान है, एशियन टाइगर्स हैं, और जो चाइना, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ वाज बेस्ड ऑन व्हाट? इट वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स. तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, बिकॉज इंडियाज कंपिटिटिव जो एडवांटेज है, इट डोंट लाई इन मैन्युफैक्चरिंग, it lies in services. So there's a huge debate ongoing, and some people are simply doubting, questioning, ridiculing basically uh, Raghuram Rajan on that. So that India cannot afford jobless growth. Services की बात अच्छी है, it's very good, but jobs हमें चाहिए, because millions of people are entering into the labor force every month, every week, or we need jobs, well paying, stable jobs. तो अगर आप देखें नंबर्स को सर्विसेज में, जिसमें ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ये सब ज़्यादा बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है ये? बिकॉज पीपल आर सिंपली नाउ रिलैक्स्ड vis-a-vis द कोविड का जो इम्पैक्ट था वो ट्रांसपोर्ट, होटल्स, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा था. बट नाउ थिंग्स आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक.
विच इज़ वेरी विजिबल। अभी ये बात भी सही है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि नया कोविड का एक वेरिएंट भी आ गया है। सो डॉक्टर्स आर सेइंग, द एक्सपर्ट्स आर सेइंग यू शुड बी वेरी केयरफुल, बट नॉनदलेस इट्स अ वेरी गुड थिंग। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, नंबर्स आर ऑल्सो देयर गुड बट नॉट एज गुड कंपेयर टू सर्विसेज। सर्विसेज आर लीडिंग द चार्ज। ये अब आप जो आपके सामने जो स्लाइड है इसमें आप देख रहे हो GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइसेस पे Q2 का डेटा है ये। ऑब्वियसली वी आर कंपेयरिंग विद द कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ 2011-12 बिकॉज इन्फ्लेशन को हम काउंट नहीं करना चाहते ग्रोथ नंबर्स में इन ए वे। So that is also very important. Nominal growth and real GDP growth, that's why different. Now just see the number, percentage change over the previous year. So the Q1, Q2 is there so that you can compare these numbers. यहाँ पे numbers को देख सकते हो। तो GVA at basic prices is 7.4%. That is a very good number per se. Net taxes काफी बढ़ गए हैं compared to the last quarters, and GDP overall and all is 7.6%. सो इसके ऊपर काफी डिबेट हो रही है क्योंकि Q1 का नंबर इज यू कैन एक्सप्लेन इट, क्योंकि 2021 में अगर हम बात करें जो Q1 था, दैट इज अप्रैल, मई एंड जून। रिमेंबर द मोस्ट वोसिफरस कोविड वेव दैट वी एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया वाज इन ईयर 2021। तो अप्रैल, मई और जून का जो महीना था दैट वाज वेरी डेडली vis-a-vis द कोविड इन इंडिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स वर रिकॉर्डेड इन दैट ईयर ओनली, 2021 दैट क्वार्टर। तो काफी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी म्यूटेड हो गई थी उस क्वार्टर में, जिसकी वजह से बेस इफेक्ट के तौर पे आपको दिखाई देती है कि Q1 के जो नंबर्स हैं दे आर वेरी वेरी गुड इस फाइनेंशियल ईयर में भी और 2022-23 में भी। तो उसका इफेक्ट अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन Q2 के जो नंबर्स हैं दैट दे आर सरप्राइजिंग। Many banks, international institutions, they were predicting at the rate of around what 6.5%, 6.7%, and but this is 7.6 is heartening. It's record beating in a way. ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब मैक्सिमम जो आप ग्रोथ देख रहे हो कंस्ट्रक्शन से निकल के आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी गुड, माइनिंग क्वायरिंग 10%, these are all in all is very good. These are very good numbers. Now okay, अगर हम बात करें इकोनॉमिक जो कंपोजिशन है उसकी, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया में इकोनॉमी को अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं इन द 4 वर्टिकल्स, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स आर दैट द प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड योर एक्सपोर्ट्स, दैट इज ट्रेड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज ट्रेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्सपेंडिचर कंपोनेंट के बेसिस पे ये जीडीपी को कैलकुलेट किया जा रहा है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के कई मेथड होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, आउटपुट मेथड होता है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो किया जा रहा है, जिससे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर आपको दिखाई दे रहा है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज देयर, सो इन परसेंटेज अगर आप देखें जीडीपी के अंदर Q2 में जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है दैट इज 35.3%। दिस इज मैसिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो इसमें आता क्या है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता तो आप कैसे इसको हैंडल करोगे। बेसिकली दिस मींस all the roads, railways, airports, even private houses which are getting constructed, commercial buildings which are getting constructed, the fencing etc, ये सब कुछ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। तो 35.3% अगर एक शेयर जीडीपी में है तो दिस इज वेरी गुड। चेंज इन स्टॉक सिंपली मीन्स जो इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री इन ए वे। तो लास्ट ईयर आपके पास सामान रखा रहता है, बेसिकली द इन्वेंट्री दैट यू हैव, द गुड्स विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड व्हिच हैज नॉट बीन सोल्ड। तो उसमें जो चेंज हुआ है ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि कोई गुड है, सम thing is there, some machinery for example is there which was produced or manufactured last financial year but which was not sold, it was there lying in inventory, it got sold this year, तो वो change in stocks में आपको दिखाई देता है। this is change in inventory only. Valuables are also there plus exports and import, and which is very important here is this thing, point 8, discrepancies. So there was a huge debate when the first quarter results were out, financial year 2023-2024. There were many reports in newspapers that basically this is nothing but eyewash government of India is indulging in, हम इनका जो डेटा है वो ऑथेंटिक नहीं है, उसमें काफी ज्यादा इश्यूज हैं। ये होता क्या है डिस्क्रिपेंसी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, व्हाट इज दिस। बेसिकली मैंने आपको बताया जैसे जीडीपी कैलकुलेट करने के कई मेथड होते हैं, तो एक्सपेंडिचर कंपोनेंट, एक्सपेंडिचर मेथड में अगर हम देखें ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई ये काउंट की जाती हैं। इसके अलावा
फैक्टर बेसिस पे, जो बेसिकली फैक्टर बेसिस जब चीजें प्रोड्यूस होती हैं, तो लेबर, कैपिटल, लैंड, इसके बेसिस पे बेसिकली व्हेन वी कैलकुलेट, तो कई बार ये जो नंबर्स हैं, जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, समटाइम्स दे डिफर विथ ईच अदर, एंड व्हेन दे डिफर विथ ईच अदर यू हैव इन नंबर। तो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिपेंसी है बेसिकली 2.6%, इट इज पॉजिटिव इन ए वे। यहाँ पे 2.8% थी। सो एक तरीके से आप देखो क्वार्टर वन में -3.4 था, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो 6.2 के अराउंड ये आ जाएगी। दैट्स ए ह्यूज डिस्क्रिपेंसी। जनरली इट इज नॉट मोर देन 1%। तो ये भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ कि डेटा जो है कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहा है। दो मेथड से हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं और दोनों में रिजल्ट्स आर डिफरेंट। So that simply attracted a lot of controversy last time. Now, let's just check about inflation. What is happening with inflation? Worldwide inflation is a serious issue because कोविड के बाद रिकवरी जो थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई थी इकोनॉमी की, वर्ल्ड इकोनॉमी की। Then you had a war in Ukraine. Because of that war, a lot of things Ukrainians and Russians exports, which are very important for the developing countries to the global south and developed world as well, that is energy, oil and gas, plus things like fertilizers, things like grain. So a lot of inflation is caused by this. फूड इन्फ्लेशन, फर्टिलाइजर महंगा हो गया काफ़ी ज़्यादा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ रही है फर्टिलाइजर्स के ऊपर, बिकॉज वी इम्पोर्ट मैक्सिमम फर्टिलाइजर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। More than 1 lakh crore rupees has been spent last financial year on fertilizers subsidy. तो inflation is a very serious issue. कम लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2023 की, 2022 में वॉर शुरू होती है फरवरी में, एंड सिंस अप्रैल एंड मई 2022 टू 1st of February 2023, I'll just write it down. So अप्रैल 2022 से अगर आप देखें फेब 2023, ये जो पीरियड है इसमें इंडियन रिजर्व बैंक ने they have increased the repo rate by 250 basis points। 250 basis points उन्होंने जो रेट है वो बढ़ा दिया। Why? To combat inflation. This is not a event which has only happened in India. Bank of England have raised more than 300 basis points. America, they have raised more than 300 basis points, which is very huge. This the last time it took place in 1970s, energy crisis 1973 में जब हुआ था, उसके बाद से मैक्सिमम जो पॉलिसी रेट है वो बढ़ी है अमेरिका के अंदर। इसीलिए आप देखते हो दुनिया भर में डेवलपिंग कंट्रीज से कैपिटल इज सिंपली फ्लडिंग। सो सीपीआई की अगर हम बात करें, यू कैन सी द वोलेटिलिटी। अप्रैल 2022 से डेटा कैलकुलेट कर रहा है, जनवरी जुलाई 2023 तक का। सो हियर द नंबर्स हैव समवॉट रिड्यूस्ड बट देन स्टार्टेड इंक्रीजिंग अगेन। सो दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, जस्ट फोकस ऑन दैट। ये नंबर आ कहां से रहा है? जनरली अगर हम देखें सीपीआई हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है दैट वाज कांस्टेंट समहाउ। जो कोर सीपीआई कोर है आप देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट कांस्टेंट। हालांकि जो बैंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टारगेटिंग है दैट इज 4 ± 2%। ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो इंडिया में है उसके तहत 6% मैक्सिमम इन्फ्लेशन हो सकता है सीपीआई, और मिनिमम जो इन्फ्लेशन है वो 2% होता है। ये जो बैंड है 4 ± 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीपीआई कोर आप देख रहे हो कि इट इज होवरिंग अराउंड दिस ओनली, बट द फूड इन्फ्लेशन इज वेरी मच वोलेटाइल। व्हाई? बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में मानसून जो है इस बार, लास्ट ईयर जो 2023 में मानसून हुआ है, is 6% less compared to long-term average. The reports are suggesting that 2023 was the second warmest year in Indian history in the last 122 years. Yes, the year which was the most warmest was 2016। उसके बाद 2023 सबसे ज्यादा गर्म साल रहा है हमारे लिए। तो मानसून इतना बढ़िया नहीं रहा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हिट हुआ है, और दुनिया भर में देयर इज अ फूड शॉर्टेज, फूड इन्फ्लेशन। दैट्स हाउ यू सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्पोजिंग ए लॉट ऑफ बैन्स ऑन एक्सपोर्ट्स, चाहे वो ओनियन हो, चाहे वो राइस हो। they have qualified wheat export as well। So because in India they are basically fearing कि भाई inflation is pretty much because of that and we don't want it। ये election year भी है, plus inflation obviously is not a good thing if it is beyond a point। तो इंडिया की अगर हम बात करें, by and large inflation is under control। लास्ट ईयर मेनी मंथ्स द WPI होलसेल जो इन्फ्लेशन है, it was in 2 digits but it has been put under control now।
और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि 2020 में जब कोविड आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी फिजिकल पॉलिसी के तहत दे डिड नॉट ओपन अप द पर्स, दे सिंपली केप्ट देयर हैंड्स अंडर चेक, और उन्होंने बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट को नहीं बढ़ाया, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में पंप नहीं किया। सो एक तरीके से डिमांड को उन्होंने कंट्रोल में रखा, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स को करते रहे, जिसका जो बेनिफिट है विच वी आर रीपिंग इन मेनी कंट्रीज, लाइक फॉर एग्जांपल अमेरिका, इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। व्हाई? Simply because they have spent a lot of money during COVID time. वो जो पैकेज था उनका सपोर्ट पैकेज कोविड के टाइम पे, दैट वाज मोर देन $2 ट्रिलियन वर्थ। यस, तो जिसकी वजह से लॉट ऑफ इश्यूज है। मॉनेटरी पॉलिसी, बेसिकली मनी सप्लाई जब इकोनॉमी में बढ़ती है और प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट लाइक कांस्टेंट, नियर कांस्टेंट, तो इन्फ्लेशन बढ़ना ही बढ़ना है। सो दिस इज आल्सो वेरी गुड। जो प्रोजेक्शंस है इन्फ्लेशन के, दैट विल बी अंडर कंट्रोल। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, और एज ऑन 4th of January 2024, it is hovering around 70-75 dollars per gallon. And India, a lot of oil is being imported from Russia at a discounted rate. So by and large we are reasonably uh, at a better place. और ये भी बात कही जा रही है कि अब फ्यूल्स के जो दाम है पेट्रोल एंड डीजल के, वो कम किए जाएंगे 8 to 10 rupees, which we will see exactly what is happening. So by and large, inflation situation is also good. It is under control. Growth numbers are very positive when the world is suffering from stagflation. The world is suffering from stagflation. What is stagflation? Stagflation is, this is when the growth is muted, it is stagnated, और इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा है, राइज हो रहा है इन्फ्लेशन का। तो इंडिया में अगर हम देखें, ग्रोथ इज नॉट म्यूटेड, इट इज वेरी वेल, 7.6% इज वेरी ह्यूज नंबर, एंड इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल एज वेल। सो दैट इज आल्सो वेरी गुड थिंग। नाउ what could be the setbacks that we can receive? Yes, geopolitical risk तो है ही नेक्स्ट ईयर। आज ये बात कही जा रही है, मेनी कंट्रीज हैव इशूड ऑर्डर्स कि भाई उनके सिटीजन्स को लेबनान से निकल जाना चाहिए। तो वॉर कैन एक्सपैंड इन द मिडिल ईस्ट, it can go to Syria, go to Lebanon, go to Turkey. We don't know exactly at this point of time what is going to happening in the South China Sea, the Chinese, how they are going to behave, we don't know. Plus the biggest headache is the El Nino effect that we are going to have in 2024. El Nino is back. ये जो साल है, ये El Nino का साल है। लास्ट टाइम जब 2015-16 was the, I just told you, 2016 was the most warmest year on record on this planet. So 2015 में अल नीनो आया था। बाय 2015 दिसंबर इट गॉट मैच्योर्ड फुलफुली, एंड 2016 इसका जो इफेक्ट है वो हमको मैक्सिमम तौर पे दिखाई देने लगा। सो जस्ट होप, वी आर होपिंग इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर मानसून पे इतना नहीं होगा। अगर होता है तो दैट विल बी अ वेरी बैड थिंग। नाउ just look at what is the fiscal outlook for the union state governments are going to be there next year. And because this is also very important, the fiscal policy at the hand of the government is absolutely a very important part for the overall growth strategy. Nominal GDP जो है, अगर हम देखें 2022-23 एनुअल ग्रोथ, आप देख सकते हो नंबर, these numbers are there, these are revised estimate, क्योंकि इनका फुल नंबर हमारे पास आ चुका है। जो बिफोर एस्टिमेट 2023-24 का है, दिस इज बेसिकली इंडियन बजट जब 2023 का हमने फरवरी लास्ट ईयर में देखा था, तो दैट वाज फॉर द फाइनेंशियल 2023-2024। तो बिफोर एस्टिमेट की अगर हम ग्रोथ देखें नॉमिनल जीडीपी की 10.8% वी आर प्रोजेक्टिंग। व्हाई दिस इज डिफरेंट? नॉमिनल जीडीपी इज व्हाट? नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है? इन नॉमिनल जीडीपी ऑब्वियसली वी कैलकुलेट द इन्फ्लेशन एज वेल। सेंटर्स नेट रेवेन्यू अगर हम बात करें, व्हाट इज नेट रेवेन्यू? Net of states, as you can see in the note, net of states share in central taxes collection under NCCD to be transferred to NDRF. So net revenue जो अगर हम देखें 12.1% we are anticipating. Gross tax revenue basically 10.4%, corporation tax 10.5%, income tax 10.5%, excise duty 5.9%, CGST 12.1%, custom duty 11.0%. So you must have seen the reports जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि GST का काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि 1.65 लाख करोड़ रुपीस हैव बीन कलेक्टेड इन दिसंबर 2023। सो ग्रोथ नंबर्स जो हैं टैक्स के, इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द पीपल, ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग एज वेल। बट टैक्सेशन की अगर हम बात करें, सो देयर इज अ लॉट ऑफ यूफोरिया अराउंड टैक्सेशन, दैट इंडिया का फाइनली जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, इट इज होवरिंग अराउंड 12%। दैट इज अ वेरी गुड नंबर।
उसको और हमें आगे लेके जाना है, इकोनॉमी को और फॉर्मलाइज करना है और डिजिटलाइज करना है, और जो इंडिया स्टैक है उसको पेनिट्रेट करना है इंडियन इकोनॉमी में, जो पैरेलल इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है, उसको एलिमिनेट करना है। तो ज़्यादा ज़्यादा जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, टैक्स आएगा, देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैन स्पेंड दैट मनी टू इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनमें डबल डिजिट ग्रोथ आपको दिखाई देगी, एक्सेप्ट एक्साइज, बिकॉज दिस इज ए वोलेटाइल नंबर। एक्साइज को छोड़ के अगर आप देखें, बाकी हर जगह डबल डिजिट ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। टैक्स ब्यूएंसी जिसे हम कहते हैं, व्हाट इज टैक्स ब्यूएंसी? टैक्स ब्यूएंसी इज नथिंग बट the basically the relation between the growth in taxation and the growth in GDP. So this is also very important. It is more, if it is more than one, it means tax buoyancy is there. So जो कि हमारे पास अभी है, which is very good. फिजिकल डेफिसिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टारगेटिंग कि भाई फिजिकल डेफिसिट जो है 2022-23 में 6.4% था, उसको हम कम करके और नीचे लेके आए, इट शुड बी 5.9%। दिस इज द टारगेट व्हिच हैज बीन प्रेजेंटेड इन द बजट लास्ट ईयर फरवरी 1st। तो 5.9% हमारा टारगेट है। लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू फेयर ऑन दैट, बिकॉज रिमेंबर दिस इज एन इलेक्शन ईयर, और freebies there are going to be a lot of them. So just see and hope कि fiscal deficit भी muted रहे या कम रहे, 5.9% से 6% breach ना करे, because a lot of money government of India is borrowing from the market, and उसकी जो interest payments हैं obviously there will be there to be paid. Central transfers जो हैं, devolution grant to the states, that is also has been very good healthy numbers. You can see the UP is on the top. UP को सबसे ज़्यादा devolution grants दिए जा रहे हैं. UP is also in a state which is spending a lot of money on capex, capital expenditure. They are building a lot of roads, highways, transport के जो modes हैं उनको बढ़ाया जा रहा है वहाँ पे. This is also very good thing. So across the spectrum, you see there are states like Maharashtra and UP, Gujarat and Tamil Nadu, Karnataka. They're spending a lot of money in these domains, which is also very good thing. So central transfer जो है crore rupees में अगर आप देखो, this is also going to increase as tax collection is increasing of the central government. So all in all, in this front also things are looking good. Now monetary policy outlook की अगर हम बात करें, so मैंने आपको बताया कि first of compared to March 2022 to February 2023, Government of India, there was a lot of challenges when it comes to inflation. So Reserve Bank of India also came forward. They have reduced, basically, if you see their monetary policy, उन्होंने इन्फ्लेशन को काफी ज्यादा टारगेट किया और लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स तक रेपो रेट जो है उन्होंने बढ़ाई। सिंस दिस लास्ट ईयर 2023, मार्च एंड अप्रैल, पिछले 3 क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो उन्होंने जो पॉलिसी रेट है उसको, ये रेपो रेट है उसको उन्होंने बढ़ाया नहीं है ना कम किया है। सो बेसिकली दे आर लुकिंग एट स्टेबिलिटी, विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। अगर हम देखें पॉलिसी रेट को, तो जो कॉल मनी रेट है और 91 डे ट्रेजरी बिल रेट्स हैं, शॉर्ट टर्म मनी होती हैं ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल, ये जो ट्रेजरी बिल आप देख रहे हो, प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं फॉर इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स। समटाइम्स दे आर फॉर 1 डे, समटाइम्स दे आर फॉर फोर्टनाइट, समटाइम्स दे आर फॉर 91 डेज। तो ये आपने देख रखा है, कॉल मनी रेट इज ऑल्सो द सेम ऑब्वियसली, ये जनरली 1 डे का होता है। तो दे आर कन्वर्जिंग अराउंड द रेपो रेट। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स ऑल्सो, यू सी, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं उनकी जो मैच्योरिटी है, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स उनकी मैच्योरिटी है, इट इज कन्वर्जिंग। यू कैन सी यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आपको कन्वर्जेंस दिखाई दे रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट डज दिस मीन? इट सिंपली मीन कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनका यील्ड जितना कम होगा, उतना, इसका मतलब ये हुआ, उतना ज्यादा फेथ है इन्वेस्टर्स को और द मार्केट्स को ऑन द गवर्नमेंट potential of paying back the money and the growth prospect of the economy. And they are converging with the short term bonds as well. It means there is a lot of demand of Indian bonds, Indian debt in the international market. So this is also very interesting. The world have faith in the Indian economy. Credit growth की अगर हम बात करें, बैंकिंग की अगर हम बात करें, it has improved a lot. One of the biggest challenges that we have faced in the last decade, which I am calling lost decade, was when the NPA crisis hit the Indian economy. NPA crisis, non-performing asset crisis. इसके लिए अरविंद सुब्रमण्यम साहब, the former chief economic advisor, basically he has
given a term, and that is the dual balance sheet problem. So corporate जो balance sheet थी, या जो banking balance sheets थी, because of variety of the reasons, they were simply on the red. Banks didn't have money to lend. The lot of money was stuck, and the corporates also काफी ज़्यादा leverage थे, so they cannot borrow money. क्योंकि बहुत सारे projects they were stuck in environmental regulations. Simply there was no demand in the economy, so they got stuck. Many got stuck in court cases. So all in all, crony capitalism भी हुआ काफी ज़्यादा. So banking जो sector की जो situation थी, that was not good. तो पिछले अगर हम देखें 10 सालों की बात करें, तो there was a lot of problem on this front. The banks didn't have money. Lot of cleaning up, recapitalization of the banks were going up. और लास्ट ईयर 2023 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, it also noted one of the greatest success of this government was to tackling the non-performing asset crisis. So here you can see that now the banks have started lending. Again, they are lending a lot of money to personal loans. On the personal front, you see agriculture, services, non-food items, not food credit, except industry. Industry का number अभी भी इतना बढ़िया नहीं है. So as you can see, it is there. So except that, you see the credit growth is very healthy. So which is also a very positive sign. ये है GNPA रेशियो. सो आप देख सकते हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, इट इज डिक्लाइनिंग अ लॉट. सो जून 18 के अराउंड गॉट पीक्ड, और उसके बाद से देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन, व्हिच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द इंडियन इकोनॉमी. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर? व्हाट आर द हेडविंड्स एंड व्हाट आर द टेलविंड्स? सो ये एग्जैक्टली वर्ड जो यूज कर रहा हूं मैं, व्हाट इज हेडविंड, व्हाट आर द हेडविंड्स? हेडविंड्स आर सिंपली द नेगेटिव, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. एंड व्हाट आर द टेलविंड्स which are going to be good. So tailwinds की अगर हम बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी में जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, that is pretty much there. We have the advantage of 3D. Yes, 3D: democracy, demand, and demography. So 3D advantage that we have resilient political economic institutions in a democracy. We have huge demand because of the demography that we have, because 1.4 billion people, we are the biggest country on this planet. हमारी जो मीडियम एज है आज भी, इट इज अराउंड 27-28, एंड टिल मिड 1940s वी विल बी वेरी यंग. सो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर इंडिया टू ग्रो रिच. So these are the tailwinds. Macroeconomic stability है, banking sector has been cleaned up, political stability is there, single party rule is right now in India, which is very pro market as per the reports. That is also there. Plus Indian Western जो alliance है, which is simply taking shape, is also very important. We are simply signing off many trade agreements with lifestyle. We have signed with UAE, with Australia. We are discussing it with European Union, UK. There are many countries with which we are discussing the free trade agreements. We are focusing a lot on skilling our workforce. We have simply many policies you can see. Last year alone, the capex which was allocated in the budget 2023-2024 was 10 lakh crore rupees. 80,000 crore, 80,000 kilometers worth of rail. We have railways, the tracks we have added in last 10 years, 2011 to 2022. A lot of money is being spent on creating hard infrastructure, which is very good. इसके अलावा अगर आप देखो रिफॉर्म्स की बात करें हम, तो बैंकरप्सी कोड, IBC कोड is going very well. Apart from that, we have new penal codes right now. Justice system is getting reformed. We are talking about elimination of the obsolete laws and regulations. इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति, PM Gati Shakti monetization plans of the highways and other infrastructure assets are also there. So all in all, there are many tailwinds. Government is focusing a lot on skilling of the workforce. We have pro-manufacturing policy in place like PLI, Production Linked Incentive Scheme. That is also very good. As you see these days, India से जो exports हैं मोबाइल फोन के, Apple फोन के particularly, they are rising a lot. तो tailwinds are there in place. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हो चुका है, या इट इज बैक टू नॉर्मल. हेल्थ. सो ऑल इन ऑल द टेलविंड्स. हेडविंड्स ऑब्वियसली दे आर देयर. इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, अभी भी
अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है दैट इज hovering around 6 to 7%. सो जो लास्ट सितंबर अक्टूबर 9th को जो डेटा रिलीज हुआ पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है PLFS, वो जो डेटा रिलीज हुआ है वो कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट हैज रिड्यूस्ड, बट obviously there is a huge divergence in urban area and rural area. Demand for Manrega is still high, as you can see in the reports. That is also a indicator that everything is not going well in the rural economy. तो जो के शेप्ड रिकवरी है इंडियन इकोनॉमी की दैट इज प्रीटी मच देयर. व्हाट इज के शेप्ड? कोविड और वॉर के बाद, वॉर के बाद के शेप्ड रिकवरी है. सो इफ वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, द सर्विस सेक्टर, यू कैन सी इट इज ग्रोइंग वेरी वेल. और जो रूरल सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही. सो all in all, this is also there. Geopolitical confrontation across the world, obviously, that is can have negative impact on us. अभी रेड सी पे एक इंडियन फ्लैग्ड वेसल को अटैक किया गया. So these are not healthy signs for the next year economy. Plus, world growth is also very important for the Indian economy. If there is no demand in Europe, in America for Indian goods, obviously it will lead to muted export growth, which we are looking into this year. लास्ट मंथ का जो डेटा है वो भी हमसे ये कह रहा है कि ग्रोथ जो है, एक्सपोर्ट्स जो है हमारी, उसमें जो ग्रोथ है वो म्यूट हो गई है, गिरती जा रही है. FDI अगर हम बात करें सिर्फ, तो ये ऑलमोस्ट 20% डाउन है कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर. 20% FDI डाउन. सो वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी. दीज आर द हेडविंड्स. So I hope all of you enjoyed this lecture. This was the first lecture in the series. I hope all of you will be joining me in the next few lectures. Or please share this initiative, this channel with your friends. And you can contact me on that Telegram channel, or directly if you want to talk, you can send a mail on the Gmail which has been mentioned there. Thank you for giving your time.